integrals, that will be for the type of singularity which I have not discussed till now, and that is the singularity associated with multi-valued functions. Okay, multi-valued functions. So the multi-valuedness of a function, that means having multiple values at same point, is also considered as a singularity. Okay, that is also considered as singularity. And here I will discuss one type of multi-valuedness that appears, and that is known as branch point. Okay, so now let me consider a function. So consider a function, say fz is equal to z to the power half. Okay, let us consider this function fz is equal to z to the power half. And if I take this to be equal to omega, right? So just z to the power half becomes omega. Then what you will see is that in this space, we will have two copies of this, because omega square will be equal to z if I write, and then omega will be equal to z to the power half and minus z to the power half, right? So you get two copies of, please write, in omega space, in omega space, we get two copies of z plane to cover 0 to 2 pi in omega plane. And point number 2 is if z is equal to r e to the power I theta, we write, then we will have omega is equal to r to the power half e to the power I theta by 2. Correct? Yes, sir. So for z half, there will be two sheets, I mean the Argand plane, two sheets known as Riemann sheets. Okay. So with all this, like if you write omega square is z, then if I return from here, I will find out that omega is z to the power half and minus z to the power half. Correct? Yes, sir.
right? And at z is equal to 0, both are same. Yes or no? Both are same. So I mean these values, they become same at z is equal to 0. So if I just make the two sheets to represent one point this and another point this, you will see that these sheets have to become same at one point, and otherwise they are different. So this will become z is equal to 0, and suppose this is z half sheet and this is minus z half sheet. Okay, so they have to converge to point z is equal to 0, and at this point they are not different, because at 0 both values are same, and this value will be known as branch point. So where both these values are same, huh? Both these values are same. So suppose you write it like this. Suppose this is first value, and this is the first sheet, okay, and this is the second sheet, okay, second sheet. So it is something like this, that from first sheet, using this you can enter into second sheet. Yes or no? Yes, sir. And Yes, sir. using this you can enter here. So these, when used in advanced physics to represent two separate worlds, दो अलग अलग दुनिया है मान लो, so that is connected by a singular point, right? Through this singular point, so जब ये सारी calculations they are applied into physics, so they may lead to very interesting, I mean, maybe they are not experimentally proved, but mathematically they give very very interesting results. Like through this point, if you pass through this point, you enter into sheet 2. Yes or no? Or if you travel like this, you enter to sheet 1. So that common point, if I can show using two papers, just give me a second. So suppose these are two sheets, okay, right? Yes, sir. And then यहाँ पे इसको इस तरीके से टच करा दो, okay, at one point. Otherwise they will be going like this, okay. So that point where it is touching here is z is equal to 0. Yes. Okay, so such functions, they, if represented like this, suppose I represent them like this, like this, so this will be the amount of discontinuity that will happen between them. And if I just represent them by magnitude 2 mod x, right, this is the amount of discontinuity that will happen. Okay, so 2 mod x to the power half. Okay, so if I take just the difference, this is x plus iota y to the power half. Another one is x minus is in the front. So just to represent the difference, it will become this. Okay. And another one, another type of branch point should also be understood right now. So now let me just ask you, if you have a function fz is equal to z minus z naught to the power half, what is the branch point? Right now. Z naught. Branch point is z naught. Absolutely correct. And if you have a function fz is equal to
z minus z naught, and infinity is also considered as branch point. Okay, Yes, sir. because the same situation of touching the two planes will also happen at infinity, right? And if you write z minus z naught to the power half and z minus z naught 1 to the power half, then Z naught and Z Z naught. naught and Z naught one. Two branch points, Z naught and so, Z naught one. and infinity will not be a branch point. Okay, and the rule is that if you add them, half plus half, and it has become integer, then it will not be a branch point. Okay, ठीक है? Yes, sir. Sir, And suppose it And was suppose it 1 was by 3 1 by here, 3 here. then z naught, z naught 1 and infinity, all of them will be the branch points. ठीक है? So Yes, sir. just these things can be seen using limits, but I am telling you simple rule. You can see from here that whether infinity is a branch point or not. हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? So branch point is a singularity which I have to understand for this also. Fz is equal to log of z. Okay. Now, like there it became theta by 2. So to cover, you have to move 0 to pi and pi to 2 pi. So you need two sheets, okay, to cover. So here also let us see. If I write z is equal to r e to the power I theta. Okay. Yes, sir. Z is equal to r e to the power I theta. Then what will happen? Suppose I just represent a point log of a. Suppose this is a point. And if I take log of z will be equal to log of r plus iota theta. And I will write theta as general angle 2n pi. Okay. So now if I take full one circle, I end up at a different point. Please see this. This was a point corresponding to say log of a, and now this is another point. And by just revolving once, you end up at a different point and the radius will increase. So since the radius will increase, why the radius will increase? Because you see here the imaginary part will increase, correct? Yes, sir. So because of this, you get at another point, log a dash. So there is no uniqueness, like you should have come like this, then this point was unique. But there is a loss of uniqueness. That means there is the multi-valuedness in the function. And that happens because of this origin. Because if you have taken it like this, suppose you just go like this, then this will not happen. Are you getting it?
Just imagine this to be going like this. Okay, I mean just taking a leap around this point. Until unless you include this origin, you will not end up into this kind of discontinuity. So because this is happening here about z naught is equal to 0, so because of this 0, this multi-valuedness is introduced. So z naught is equal to 0 in this case is known as branch point. Okay, so it is just like moving in a multi-level parking. You take one turn and then you are just above that point. You take another turn, you are just at another point. So you are at different planes as you take one turn. And those different planes I will say here as a different sheets, different Riemann sheets. Okay. So from one principal sheet, you move to another sheets by taking the revolution. So here z naught is equal to 0 is a branch point. Because of this, the function has become multi-valued. So in general, if I write fz is equal to ln z minus z naught, if I write it like this, then z naught is a branch point. Z naught is a branch point. In this case also, if I write f of z is equal to ln of z minus 1, suppose I write it like this. So z is equal to 1 is a branch point. So we have to just use this as a singularity, and like we had the poles and we calculated the integrals, we will calculate integrals using this also. Okay. सर Hmm. मतलब Yes. उस पार्ट पे हम फिर से क्यों नहीं आ जाते, ये नहीं समझ में आया। तो यहाँ आप अगर थीटा में थीटा प्लस सपोज आपने ऐड कर दिया 2 पाई, हम्म, so now you will get a, corresponding to that you will get a new complex number that will have the bigger radius. हाँ क्लियर सर, So थैंक to यू। represent that we have to write, okay. So I am writing a general so fz is equal to z to the power 1 by n, where n is 2, 3, 4, like this. So this is called algebraic branch point. Correct? Yes, sir. And if you have f of z is equal to log of z minus z naught, then this is called logarithmic branch point. So both we have understood now. Yes, sir. So यही सिंप्लिसिटी के साथ इतना ही समझ लेना है, और उसके बाद आवर जॉब इज टू do the integrals associated with this. So I will discuss two types of integrals associated with branch point. So the first one is integral 0 to infinity
x to the power alpha fz dz. This is equal to 2 pi I upon 1 minus e to the power iota 2 pi alpha. Okay? Sir, that is z to the power alpha. Hmm? Z to the power alpha. Z to the power alpha fz. Here it is x to the power alpha. Okay? fx dx. Real integral है ना? Yes, sir. Yes. Okay? So 2 pi I 1 minus e to the power iota 2 pi alpha and sum of residue of z to the power alpha fz except at z is equal to 0. 0 is a branch point and value of alpha is between 0 and 1. Please understand this. So I am just telling you as a theorem. The contour and everything has been done. We can use this as a theorem. Is it okay? So let us understand this with an example. And the example is like this. Suppose somebody says you to find this x to the power minus alpha dx upon x plus 1. And the value of alpha is between 0 and 1. Suppose we have to solve this integral. So can we compare it with this? Yes, sir. Everybody see this? Can we compare it with this? Yes, sir. What is the value of fx? 1 by x plus 1. 1 by 1 Sir, plus x x. to the 1 upon power x plus plus 1. alpha, right? So please understand here it is plus alpha and here it is minus alpha. Okay? And both are not same. So what I will have to do it, I will have to multiply x like this. Yes? Now it is okay. So this alpha should be between 0 and 1. Now it is between 0 and 1. Are you getting it or not? सर हमने Yeah. किससे मतलब 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया है पावर लेकर देखो ये क्वेश्चन मत पूछो, पहले जरा ध्यान से देखो, थोड़ा माइंड भी तो, आप माइंड तो बिल्कुल नहीं चलाते हो। अगर मैंने यहाँ x लिखा है तो क्या किया होगा बताओ? बताओ कंचन। 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई Here we have like this. ठीक है? अब अगर मैंने यहाँ x लिख दिया तो इसका मतलब मैंने क्या किया होगा बताइए जरा। 1 अगर मैंने माइनस यहाँ x से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी x से तो मल्टीप्लाई किया ऊपर होगा। भी x से मल्टीप्लाई किया होगा। इसमें ये भी सोचने की कोई वो है? I would have multiplied by x. तो x है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया 1 माइनस एक्स। अरे इसमें x टू द पावर माइनस एल बाई एक्स प्लस 1, यहाँ मैं ऐसे नहीं कर सकता? बताओ भाई। सर हम्म? यस सर क्लियर
क्लियर की Yes, बात sir. नहीं, थोड़ा माइंड चलाते ही नहीं हो बिल्कुल भी, तो नया क्वेश्चन सामने आएगा तो कैसे चलाओगे बताओ? प्योरली रोबोटिक नहीं रखना है अपने आप को, नहीं तो आप कितने भी क्वेश्चन लगा लो नए क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। माइंड हमेशा ओपन रखना है कि पहले जरा दिमाग पे सोचो कि क्या किया होगा। भाई हम ऐसा कर ही नहीं सकते ना, हम क्वेश्चन को बदल तो सकते नहीं है। ये आप किस क्लास से करते आ रहे हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाला काम? पुनीत बताओ भाई, हाँ सर, 6 क्लास से। किस क्लास से हम लोग ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे हैं? और अरे ऐसा कर सकता हूँ क्या कि नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर एक्स से? कैन आई डू दैट? हाँ सर। राजकिशोर बताओ। नहीं सर, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सेम लेना पड़ेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर से कर दूं और यहाँ एक्स से रहने दूं? फिर तो तुम्हारा नहीं सर, फंक्शन ही बदल जाएगा ना। यस सर। वेरी गुड। तो whenever I say this, मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप अपने आप को, आप लोगों को, you have to improve yourself. Okay, so now this is okay. 1 minus alpha इस वाले अल्फा के इक्विवेलेंट हो गया कि नहीं हो गया? देखो, मन में सोचो, अगर अल्फा 0.5 है जो कि गिवन है 0 to 1 के बीच में है, तो 1 minus 0.5 will become 0.5 which is between, बोलो भाई, 0 and 1. Okay, so now we are just in the position to apply the theorem. तो अप्लाई कर देते हैं थ्योरम को सीधा। लिखो जरा, इक्वल टू, बोलो, 2 pi अपॉन 1 1 माइनस माइनस e to the power I 2 pi 1 minus अल्फा alpha, because our alpha is 1 minus alpha, and sum of residue for z to the z इक्वल टू power माइनस 1 minus alpha upon z plus 1. Yes, यस बताओ सर। भाई, इज दिस क्लियर? कंपेयर करके बोलो। आवाज लगातार आ रही है कि नहीं आ रही भी? ब्रेक हाँ तो नहीं सर, आ मारी? रही है सर, आ रही है। कंपेयर इट एंड देन टेल, इज इट ओके? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब let us calculate the residue. So what are the poles? Yeah, tell me the poles. Who will tell? तो z इक्वल टू, Puneet, you wait. यस सर। I know you know these things. I will ask somebody. Vikas, can you tell? Vikas, what are the poles? Vikas, you are there? Yes, sir. बताओ, poles क्या क्या हैं? डिनोमिनेटर देख के बताओ फटाफट। So z is equal to 0. Z is वेरी equal गुड। to और minus 1, sir. तो जीरो कंसीडर करेंगे, ये लाइन पढ़ो। No, sir. तो इसको हटा देता हूं। सो रेसिड्यू किस पे निकालना है? -1 पे निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? लिमिट, विकास, z टेंडिंग टुवर्ड्स Minus 1. -1 Z plus 1 z 1 minus alpha upon z plus 1।
z plus 1 कैंसिल हो जाएगा. So what will have? Minus 1 to the power 1 minus alpha upon minus 1. Yes or no? Which is minus 1 minus 1 minus, sorry, plus 1 minus alpha. One and one cancel. So e to the power I alpha I pi to the power minus alpha, which is e to the power minus I pi alpha. Please check all the steps. Is it visible? Yes, sir. Is it okay? I have used minus 1 is equal to e to the power I pi. That we know na? This we know? Yes, sir. Okay. So इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो इस कैलकुलेशन में. Then I am coming here. No So doubt, sir. very nice. तो sum of residue में यही मल्टीप्लाई कर दूं. कितना आ गया मेरा? E to the power I pi alpha with minus sign. और यहां पे जरा देखो तो क्या है? E to the power I 2 pi into e to the power I 2 pi into e to the power कितना है जरा बताना? Minus I 2 pi alpha. 2 pi alpha. Yes, sir. And this is 1. Yes, sir. तो इसको हटा देता हूं. This is 1. अब देखो ये थोड़ी अलजेब्रा करनी पड़ती है. So this will become 2 pi I. I am taking this downward. So it will become e to the power I pi alpha minus e to the power minus I pi alpha. Correct? Yes, sir. And 2i also I am taking in the denominator. So 2i in the denominator. And this will result into pi by sine pi alpha. Such a compact answer you got. Please see. I have used here sine of x is equal to 1 upon 2 iota e to the power ix minus e to the power minus ix. This is my suggestion that whenever you are doing questions, आप अगर ये हैबिट है कि हर स्टेप आपको पता चल जाए तो आपका माइंड अपना कभी डेवलप होने वाला नहीं है. थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करना है आपको अपने माइंड को. एक बार सोचने का उसको भी मौका देना है. दिस इज फॉर योर ओन बेनिफिट. सो माय सजेशन इज कि जब भी आपको कुछ मिले तो थोड़ा सा आप माइंड को अपने अप्लाई करो. व्हाट इज हैपनिंग? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, एटलीस्ट 5 सेकंड, एंड देन go for help. You agree with this or not? Tell me. Hmm? Yes, Kanchan, sir. Yes, sir, I agree. you agree ना? So this is for your benefit. सबको ये चीज अप्लाई करना है. धीरे 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 आप देखोगे बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. थोड़ा सा अगर हम मौका अपने आप को देते हैं, वो मौका हम हमेशा मिस करते रहते हैं पढ़ाई करते समय भी. ये आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? अच्छा 1 है. वो भी नहीं आपको पता होगा एग्जाम में. फिर
आप देखना ध्यान से कि जब आपके पास हेल्प अवेलेबल होती है, छोटी छोटी हेल्प, जैसे आप कोचिंग में ऑफलाइन में बैठे होते हैं तो बगल वाले की कॉपी से कोई फॉर्मूला देख लेते हैं, कोई छोटी कैलकुलेशन देख लेते हैं, बट वंस यू आर ऑल अलोन, बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बिकॉज नाउ those small helps which you are taking while doing the questions, that is completely absent. Yes or no? Yes, It sir. is just like those kids who are with their parents, everything is done by their parents, and then suddenly they have to move abroad or even somewhere in India. फिर उनको रियलाइज होता है कि वो डेली की जो चीजें हो रही थी अपने आप, वो हर चीज के लिए एफर्ट करना पड़ता है, राइट और नॉट? हाँ सर। सुबह सुबह Yes. नाश्ता आ गया, पुनीत को फील हो रहा होगा, है? हाँ सर, खाने जाना पड़ता है सर। हर चीज के लिए एफर्ट करना पड़ता है, तो ऐसे ही इसमें यस भी सर। है। जो दिमाग को अगर हम मौका नहीं देते हैं तो वो बिल्कुल डेवलप नहीं होता है। अगर हम मौका देंगे तो धीरे 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 करके वो जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, मिस्टेक्स हैं, मैं इस पे इसीलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स कि वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बट एग्जाम में व्हेन दे आर ऑल अलोन तो वो जो छोटी छोटी चीजें, द हेल्प दे वर टेकिंग, दैट इज एब्सेंट, एंड नाउ दैट बिकम्स अ चैलेंज। तो क्यों ना हम अपने आप को पहले से ही उस सिचुएशन में डाल दें, राइट? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे जरा देखो, दिस इज नॉट अ वन क्वेश्चन, दिस इज 50 क्वेश्चंस, बिकॉज एफएक्स यू कीप ऑन चेंजिंग, राइट? यू हैव डन सो मेनी एफएक्स। इसको स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे x+1 x+2 लिख दो, ढेर सारे क्वेश्चंस यू कैन मेक इन द सिमिलर वे, योर आंसर विल कम। अच्छा देखो, nobody can believe that if it is 0 to infinity x to the power half upon x plus 1 dx. So I have taken alpha is equal to 0.5. Your answer will be pi. Yes or no? यस Huh? सर। I don't know from where this magic number pi appears everywhere, na? So you see, the integral of this is pi. I have taken alpha is equal to 0.5. So is this one question? नो सर। No. You have done so many fx. You have done, put fx here, x plus 1, x minus 1, x square plus 1, whatever, and you will start getting different integrals using this theorem. So this is wonderful theorem for algebraic point. This is for this is for algebraic branch point. So branch point you have just ignored, and that is done in the contour that I am not teaching you. I have just directly used the theorem so that we can do 50 questions on this. Okay? Can I erase this? Yes, sir. ओके सर। And for those, we have taken the semi-contour na, for minus infinity to plus infinity. And if the poles lie on the axis, actually we solve them like this in detail when you do it, okay? You have seen? Like this. Suppose these are the poles, but I just do it directly by taking the half. I take pi I na, sum of residue for such poles. But actually they are solved like this, taking the very small contours and going like this. Okay? Now we are going to solve a logarithmic branch point problem, and that is like this: integral 0 to infinity log of x square upon x square plus 1 dx. This is the question. Now can you see that if I convert the function fz, it will become ln z square upon
z square plus 1. And can you see that z is equal to 0 is a branch point here? Yes, sir. And what are the other poles? Iota Minus and iota. minus iota. Now, I will just make the contour like this, avoiding 0. 0 is a branch point. The contour is like this. And this is suppose radius minus r minus epsilon. This is c epsilon contour. This is again epsilon. This is r. And this is c r contour. Is this okay? Yes, sir. If you want, you can ask any basic question regarding this. It is the same contour, just I have z is equal to 0 as a branch point. So I'm just avoiding it using a very small circle of radius epsilon. So the circle, semicircle, I am representing by c epsilon. The bigger circle of radius r, I am representing it by cr. So if you remember, we write a function seeing this, and then we apply Cauchy formula, and then somehow by intelligent substitution, we get value of this from that. You remember that now? That we have done for minus infinity to plus infinity also, 0 to infinity also. Here also we are going to do the same thing. So what I am going to write is contour integration fz dz is equal to 2 pi I sum of residue. That I can do or not? Yes, sir. What is this? Cauchy integral formula. Simple. Yes, sir. Yes, sir. We have been using this. And here the contour is made up of straight line, contour, straight line, contour. So let us break it. So it will become minus r to minus epsilon fx dx plus c epsilon fz dz plus epsilon r fx dx plus cr fz dz is equal to 2 pi I sum of residue. बोलो भाई. Yes, sir. Now what I have to do is I have to put epsilon. What is this equation of the circle here? Z is equal to epsilon e to the power I theta. And what is here? Z is equal to r R e to the power I. I theta. So I will put epsilon tending towards 0 here and r tending towards infinity in this equation, in the above equation. And by the substitution, I told you, Jordan's lemma. If I put it here, this term and this term will become 0. This is happening everywhere in every question. Once that happens, our equation will become like this: minus infinity to 0 fx dx plus 0 to infinity fx dx is equal to 2 pi I sum of residues. यहाँ तक क्लियर हो तो एक बार मिटाऊंगा. क्लियर है सर. पॉइंट पे डाउट है हम्म सर. जब भी हम ये कॉन्टूर का इक्वेशन लिखते हैं हम्म सर, उस पे हम लोग जैसे फर्स्ट पॉइंट पार्ट जैसे लिखते हैं कि आर से एप्सिलॉन को एफजेड लिखते हैं, तो हम जब वो कर्व वाले पार्ट पे आते हैं तो वहां पे हम लोग एफजेड से मेंशन कर देते हैं. क्या क्या जब कर्व वाले पार्ट पे तो जैसे हम ये कर्व पार्ट पे आते हैं, जैसे कि सपोज सी आर, तो वहां पे हम लोग ये हाँ
सर तो हम वहाँ पे एफजेड क्यों मेंशन करते हैं, वहाँ एफएक्स क्यों नहीं डालते? अरे भाई, जब हम इस लाइन पे चलते हैं तो ये कौन सी एक्सिस है? X। एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू एक्स है। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। रियल एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। और जब y 0 हो जाता है तो z की वैल्यू क्या हो ओके सर, जाती है? ठीक है, आई गेट इट। और जब कॉन्टूर पे जाओगे तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट द केस, तो आई हैव टू यूज z बिकॉज नाउ यू आर ऑन द अर्गेंट प्लेन। ओके सर। तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। हमेशा तो वही कर रहा हूँ, जब भी एक्स एक्सिस पे आ रहा हूँ तो z इज इक्वल टू एक्स ले रहा हूँ। यस सर, वही कह रहे हैं। नाउ इट इज क्लियर। यस सर। कैंसिल आउट वाला टर्म बता दो एक बार। कैंसिल वाला टर्म मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ना, आप एग्जाम में भी आपको नहीं सॉल्व करना है। अगर आप चाहो तो इसमें पुट करो, वैल्यू लिमिट रखो, पूरा सॉल्व करो लिमिट को। ओके यस सर। भाई, जैसे तुमने इतने सारे कंटूर लिए, जैसे मान लो यही वाला ले लो, -r2r cr, तो इस सब केस में ये वाला पार्ट 0 हो रहा था कि नहीं? हो रहा था। तो आप चाहो तो लिमिट रख के निकाल के देख लेना। ओके ओके सर। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे जैसे है z इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई टू द पावर आई थीटा, तो आप fz में ये वैल्यू पुट करो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 करो, लिमिट निकालो, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग, यहाँ पे लिमिट r टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी निकालो। ठीक है, सर। वो करने का टाइम नहीं है एग्जाम में। ठीक है, यस सर। ओके सो नाउ तो अब हमारा ये क्या आ गया? इंटीग्रल माइनस टू माइनस इंफिनिटी इन्फिनिटी ln x बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ln x बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx is equal to 2 pi I sum of residue. And now your contour is like this. Like this. And this contour is now minus infinity to plus infinity, right? Bolo bhai. Because now radius is minus infinity. Now r is what? प्लस Infinity. इन्फिनिटी। यस सर। So let us get the residue first of all, so that the right hand side is settled. So what is the residue? Limit z tending towards iota, because iota will lie here, minus iota will be outside. Z minus iota, बोलो, log of z upon z plus iota, z minus iota. Is this okay? यस सर। So this will become log of iota by 2 iota, which is लॉग ऑफ आयोटा स्क्वायर ना। log of iota square. Square. This is square. Okay. Now log of iota is
log of e to the power I pi by 2, which is I pi by 2. Are you getting this? Yes, sir. So it will be minus pi square by 8 iota. ध्यान से देखना. Yes, sir. And when multiplied by 2 pi I into minus pi square by 8 iota, iota 2 4. So it will be minus pi cube by 4. So this is right hand side is how much? Minus pi cube by 4. कोई गलती होगी तो तुरंत बताना है भाई आपको. सही सर. Now let us adjust this because I want answer of this, so I want to see both integrals like this. So let us take minus here. सभी लोग ध्यान से देखेंगे. Limits will exchange 0 to minus infinity. And now put x is equal to minus x. Substitution. So it will become 0, it will become infinity. No change. Minus x and minus dx. So this will be gone. Yes. And log of minus x will be log of minus 1 plus log of x, which is I pi plus log of x. अब वो जो चीजें आपने सीखी हैं वो बिल्कुल ABCD की तरह यूज हो रही हैं. Log of AB is equal to log A plus log B. And this will become this square. So log of minus x square will become minus pi square plus ln x whole square or plus 2 iota pi a b. So one term exactly matches with this. So I will like 2 times integral 0 to infinity ln x whole square upon x square plus 1 dx. One term will be this, which is minus pi square 0 to infinity dx upon x square plus 1. And one term is like this, 2 times iota pi integral 0 to infinity ln x upon 1 plus x square dx is equal to minus pi cube by 4 plus 0 iota. Comparing real and imaginary part, we will got one integral free of cost ln x by x square plus 1 dx is equal to 0. This is also a previous year question of CSIR net. Because real and imaginary parts can be compared. Right hand side is no imaginary part, and this has got the coefficient iota. So clear hai? Yes, sir. Now this I have to सर ये जो आपने x से माइनस x किया इसको सिंप्लीफाई करने के लिए किया ना, इसे जस्ट सब्स्टिट्यूशन. किस चीज को? x को माइनस x से आप कर रहे हैं जैसे. हाँ, जस्ट सॉल्व कर रहे हैं. मतलब Yes. हमें तो ये इंटीग्रल चाहिए ना. यस सर.
तो इस इंटीग्रल को कैसे पहुंचे वहां तक? तो पहले तो लिमिट बराबर करें जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। यस सर। तो सबको 0 टू इन्फिनिटी की तरफ लेके जाना था। तो पहले तो लिमिट यहाँ पड़ी हुई थी, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको ऊपर ले गए। फिर माइनस इन्फिनिटी थी तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट कर दिया ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। यस बट उस चक्कर में यहाँ का x नेगेटिव हो जाएगा, फिर यस उसको हैंडल कर लिया ऐसे। यस सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नहीं सर। और किसी को कुछ पूछना है? क्यों किया भी आप पूछ सकते हैं हमेशा कि वाई यू आर डूइंग दिस, वाई वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे आपने स्टार्टिंग में 4 इंटीग्रल्स की फॉर्म बताई थी हमें कि ये फॉर्म होती है तो ऐसे ऐसे सोल्व करना है, ठीक राइट। है? एक पहले तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ही है FZ DZ, यस सर। इसी से सब निकला है। यस सर। ये तो तो कॉम्प्लेक्स है। रियल में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी एक पर्टिकुलर टाइप का फॉर्म 1 प्लस एक्स टू द पावर n dx, और फिर ब्रांच पॉइंट से रिलेटेड फिर ये अलग क्लास है ब्रांच पॉइंट का। यही पूछना चाह रही थी कि अगर क्वेश्चन आएगा तो बताएगा ना कि ग्राफ में से ब्रांच पॉइंट निकालना है, तो आपको नहीं ये वाला नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन तो ये आएगा ना, दिस इज द क्वेश्चन। हाँ सर, तो उसको आप मतलब उसमें तो जैसे आप जैसे ही FZ लिखोगे आपको पता चल जाएगा log z में z इज इक्वल टू 0 इज अ ब्रांच। हमें टाइप पता होनी चाहिए सर, जैसे किस टाइप का हम लोग है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना आंसर निकालना है। उसके अकॉर्डिंग ही निकाल सकते हो, यस सर। यस सर। निकालना नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। यस सर। इंटीग्रेशंस में अगर केसेस हम नहीं समझते तो वी कांट डू दैट एक्चुअली ना, यस सर। देयर इज नो अदर ऑप्शन। सो कैन आई रेज दिस नाउ, So one दिस more पार्ट? doubt. यस। यस सर। So this so जो आपने ये ln माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा, तो आपने ये जो फर्स्ट पार्ट लिखा वो कैसे लिखा प्लीज बताएंगे? सर इस तरफ जो आपने पुट किया, हम्म, सर इस तरफ सर दिस फर्स्ट टर्म 2 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। ये कैसे लिखा? जी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? 2 सर। तो जब यही टर्म देखो, जब log ऑफ माइनस एक्स की जगह ये log ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ये पूरा उठा के पुट करोगे ना यहाँ, यस सर। तो log एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये दो इंटीग्रल्स बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। तो क्या मैं उनको 2 टाइम्स लिख सकता हूँ? यस सर। तो वही किया है, 2 टाइम्स लिख दिया है। ओके सर। आप ये नहीं देख पा रहे हो कि ये log ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये जो पूरी चीज है इसको यहाँ पुट करना है? तो हाँ सर तीन अब तीन इंटीग्रल आएंगे, उनमें से एक जो है वो इसके साथ जुड़ के 2 टाइम्स हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा वो मैंने बता दिया, और एक ये पड़ा बता हुआ दिया। है, हाँ ये जो माइनस पाई वाला। और इसकी ठीक। वैल्यू हो जाएगी, ये देखो, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स tan इनवर्स। x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2, राइट? tan इनवर्स इंफिनिटी विल बी पाई बाई 2, इंफिनिटी पाई बाई 2। तो इसकी जगह लिख देता हूँ पाई बाई 2। तो अब हमारा आ गया 0 टू इंफिनिटी log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू, इस तरफ आ जाएगा पाई क्यूब बाई 2 माइनस पाई क्यूब बाई 4 विच इज पाई क्यूब बाई 4, और 2 यहां से इधर लेकर आ रहा हूं, तो डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, सो आंसर विल बी पाई क्यूब बाई, है ना वंडरफुल? सर ये सर सर हाँ ये जी। लॉग माइनस 1 पाई आई कैसे है? अरे तो तुम क्लास फर्स्ट पे पहुंच गए, फर्स्ट क्लास जो मैंने ली थी वहां पहुंच गए आप। आइलर्स इक्वेशन log ऑफ -1 इज log ऑफ e टू द पावर आयोटा पाई, ये बताना पड़ेगा भाई अब।
ठीक है सर, ठीक है, ठीक। वही मैं कर रहा हूँ ना, वो जो कुछ सीखे हो पहले दिन से अभी तक वो सब यूज हो गया इस क्वेश्चन में। यस सर। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा अपने आप करना फ्लुएंटली। जितने भी चीजें यूज हो रही हैं वो सब मैंने बताया हुआ है। मैं कभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कराता कि उसकी चीजें मैंने पहले ना पढ़ाई हो। एकदम लीनियर चलती है आपकी क्लास अगर आप ध्यान दोगे। यहाँ जो पढ़ाया है वो यहाँ यूज होगा, यहाँ यहाँ जो पढ़ाया है वो यहाँ यूज होगा, यहाँ 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 जो पढ़ाया है वो यहाँ, ऐसे तो चलती है। अब आज मैं चूंकि यहाँ पे हूं तो इसलिए यस। तो इस तरीके से लॉग वाले क्वेश्चंस हम हैंडल कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ कुछ बदल दो, उस हिसाब से रेजिड्यू बदल जाएगा, बट बाकी सब तो सेम ही रहेगा। बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो एनीथिंग एल्स? तो प्रैक्टिस करो अच्छे से, और पूरे टॉपिक को आपको एक बार में देखना है कि आपने क्या क्या पढ़ा। अब जैसे इंटीग्रल्स ही ले लो, तो आपने एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पढ़ा, कॉन्टूर एफ जेड डी जेड टू पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू। इफ द पोल्स आर लाइंग ऑन द रियल एक्सिस इट इज पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू। उसके ढेर सारे क्वेश्चंस करो पहले। देन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। देन 0 टू इंफिनिटी मैंने एक टाइप का कराया 1/1 प्लस एक्स क्यूब। वो एक्स टू द पावर 5 भी हो सकता है, एक्स टू द पावर 7 भी हो सकता है। यस। देन इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग ब्रांच पॉइंट, और जो दो ब्रांच पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं किसी कॉन्टूर से, दैट इज ब्रांच कट। ओके, लाइक 0 is branch point, infinity is branch point, you connected by a line, so that is branch cut. Okay, so every time you see you have connected it with two branch points, like 0 is the branch point, infinity is the branch point, so that's why contour is going from 0 to infinity. So this was your complex And analysis. अच्छे से प्रैक्टिस करो और फिर जो डाउट्स हैं उसको पूछो। सर, हम्म सर लॉगरिथमिक एंड अलजेब्राइक दोनों में ब्रांच पॉइंट के रेसिड्यू को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, राइट? करते हैं, वो वही उसको वही जो छोटा सा कॉन्टूर बना के निकल नहीं यस जाते, सर, यस वो सर, उसी में वो गायब हो जाता है। ओके ओके सर, यस सर। सो एक्सेप्ट फॉर द ब्रांच पॉइंट हम लोग हर जगह पे रेसिड्यू करते हैं। रेसिड्यू निकाल लोगे तो वो तो आपको Yes. पहले से ही आता है। यस सर, यस सर। व्हाट इज न्यू? ओके ओके, ठीक है। यस सर। यस। ओके देन, थैंक यू सो मच। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू। There is one more class, right? Vector analysis. Supposed to be हाँ. vector analysis. Okay. यहीं पर आएंगे सर? I think. आप सब वर्कशीट्स कर रहे हो? हाँ, वर्कशीट्स कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो मुझे कुछ डाउट्स हैं तो मैं पूछ लूं क्या? आप हाँ. नंबर दे दो अपना व्हाट्सएप पे प्लीज। हाँ, आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया क्या? हम लोगों ने एक डाउट ग्रुप क्रिएट किया है, अगर आपने देखा हो तो। जो अभी 2-3 दिन पहले मैसेज आया था वही? हाँ, यस 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 अच्छा, यस मैंने यस। इसीलिए ज्वाइन नहीं किया। मेरे को ऐसा था कि कोई इंस्टीट्यूट के बाहर का ग्रुप ना हो। इंस्टीट्यूट का है अच्छा तो अच्छा, हाँ डेफिनेटली मैं ज्वाइन कर लूंगी। कोई बात नहीं, मतलब इसमें सभी वही बच्चे हैं हमारे प्रवेगा के, जो डाउट्स वगैरह हैं वही डिस्कस